Hello, everyone. We welcome you to a very wonderful episode of Ideals of Pune. And today we have with us Mr. Ashish Bhuyan. We all know he's an actor, model, and he's doing so much work that we all are aware of. But today we are going to see the other side of Mr. Ashish that very few people know about him. That he is into humanity, he is into healing, he is into helping people with mental and emotional health. Very few people know what he does. We welcome you, sir, on our platform. Thank you so much. We also thank Bobby Karnani for doing this initiative, for creating this platform so that we can meet such great people and we can enlighten ourselves. We can understand few positive aspects of people who are there and who are doing good work. So, Ashish, sir, since you have two sides which are absolutely different from each other, one, you talk about showcasing the talent, when you talk about camera, when you talk about lights, right? That you everything is glamour all in and around you. And the other aspect when you talk about touching the people's lives, touching the life, creating positivity, how are you able to manage both the sides? Okay, hi everybody. Good evening. See, uh, basically, it's related very closely technically. If you see filmmaking or whether it's events filmmaking or whatever I teach, I groom actors. So it's very closely related. It's not that something which is you can differentiate. But yes, if your upbringing and the way you have been trained and the way you have done your education, the way you have traveled, all this comes into kind of one book, and then you can share your knowledge with a lot of people. So now, with little age catching on in terms of, I have seen enough life, being an army officer's son, and then being in merchant navy, being in film industry for so long. So I've come a long way in terms of it, and badmashi बहुत की है, बहुत मस्ती की है. So all this has come together, and then I have come to this phase where I try to help a lot of people who get into all kinds of trouble, or whether it's mental or physical or business-wise or spiritually they are disturbed. So I just put things together, and that's the reason we have created this mission called 10 Up. And this Exactly. stand-up does by audio-visual. We try to convey messages to our friends, our audiences, and all people who are like they have faith in us, or even if they don't have somewhere, they try to connect with us, and that's the basic purpose behind it. Yeah. That's really good. So, can you tell more about TenUp, that what exactly you do, and if people want to connect through it, how can they get connected to it? See, TENUP basically has is not an NGO. First of all, it's not an NGO. It is just a little baby which I and my brother, my friend Gaurav Mehra, together we created this little thing. And the funda is very simple. That since we have in-house setup, because we are into filmmaking, we are into events, we are into teaching. So when we have all these kind of things in-house, so we thought, why not create a platform from where we can make short films, we can do small activities, and and kind of make people notice it. A lot of people have been against कि अरे भैया तुम खाना देते हो तो कैमरे में फोटो क्यों खींचते हो, लोगों के इमोशंस को क्यों दिखाते हो. सी द एम इज वेरी सिंपल कि अगर जब तक हम लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, लोगों के अंदर वो स्पार्क नहीं जगाएंगे, लोगों को ये बताएंगे नहीं कि लोग बॉस जब आप अच्छा करते हो तो एक तो अच्छा आपके साथ होता ही है, प्लस आपको सुकून की नींद आती है, एंड यू फील गुड अबाउट इट. एंड द बेसिक एम ऑफ लाइफ इज आफ्टर यू हैव अर्न मनी, नेम, फेम, एवरीथिंग, you want peace, and you get peace only when you are making others smile, others happy, in life. And that's a very important factor, which, and 10 up does try to do that. And the kind of people who are involved in 10 up basically give their best. And that's the reason we have been doing back to back missions. Yesterday we had a mission, today also we were planning something, but now tomorrow we have a big mission with a very leading newspaper. So yes, this is the kind of stuff we keep doing it. Yeah. That's really good. That's something you're doing for the mental and emotional health. We all know that in this 1 year of pandemic, we all are at home and we are going through a lot of mental and emotional challenges. We have seen the way in a totally different 180 degrees altogether.
What changes do you see in people, and how are you able to help people? Because people are approaching, people need someone or the other to help. And in India, we find that people are not very comfortable talking to counselors, talking to someone who can really help us. I'm sorry, your audio is little breaking. But whatever I can Okay. make it, you said whatever is happening in the pandemic, right? What 1 year? That is what you're trying Yes. to ask. Yes, Okay. See, absolutely. I will say technically, I think this pandemic has made people more stronger. Yeah. Okay. And more stronger in a sense, somewhere consciously, unconsciously, you accepted that you need to fight yourself and you need to take care of yourself and your family. And now you know your priorities. So now your priorities are very clear. पहले आप सोचते थे यार पार्टी है दोस्त है रोज दारू पीना है रोज मस्ती करनी है नाउ योर प्रायोरिटीज आर क्लियर कि बॉस if the world is going to come to a standstill, how are you going to feed yourself? How are you going to feed your family? And how are you going to emotionally stay stable? Yeah. And to stay stable, what you have done is there a lot of been a lot of gurus have a lot of gurus have been speaking, a lot of people, the spiritual gurus have been talking about it. But end of the day, you have to face it yourself. And when you face it yourself, you need to understand by experimenting on yourself कि अच्छा मैं ऐसे सोऊंगा ऐसे खाऊंगी ऐसे सांस लूंगी और ऐसे बाहर जाके थोड़ा सन बाथ लूंगी थोड़ी सी हवा लूंगी थोड़ी सी बैल्कनी में जाऊंगी या थोड़ा सा योगा करूंगी थोड़ा मेडिटेट करूंगी तो दीज थिंग्स विल हेल्प मी नाउ पीपल आर अवेयर ऑफ दिस नाउ पीपल हैव द वैल्यू फॉर इट पीपल हैव वैल्यू फॉर फैमिली वैल्यू फॉर फूड पहले आप 5 डिश खाते थे आप सोचते थे हाँ आप ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा नाउ यू हैव टू नो दैट इवन इफ यू हैव मनी यू नीड टू सेव योरसेल्फ यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट अभी तो खत्म भी नहीं हुआ अभी तो शुरुआत हुई है इट्स अ काइंड ऑफ अ वॉर व्हिच इज नॉट नेवर गोइंग टू एंड and now people have understood the people who are negative people on the who are the devilish people on the mother earth they have got this warfare within okay अभी कोई बंदूक गोली चलाने की जरूरत नहीं है छोटी सी बीमारी फैला दो और लोग मरेंगे so now we need to safeguard ourselves now we need to educate ourselves very smartly and at the same time we have to be like mentally emotionally very strong and I'm sure a lot of people have become mentally very strong. That's really good. When you say people have become very strong, your experience throughout this pandemic that relates to mental and emotional health, how was your experience altogether? I'm sorry I still can't hear a lot of noise. Okay, is it fine now? There's a lot of noise, Babu. There's something, some noise is distracting. I don't know. Yeah. I am not able to hear any noise. I don't know. Is it fine now? Okay. Just repeat the Is it? question. I'll try to understand whatever. Yeah. I just said. Uh, I just said. In this pandemic, when you talk about mental health, emotional health, how much that is important for a proper well-being, apart from your physical health. Of course, that's most important. See, it's not about only in the pandemic. What has happened has been explored a little more. People have understood the value of mental health and emotional health. Initially, you used to just take it in other way around. You take it very lightly, you know. कि भैया अगर मुझे कुछ हो गया है तो I will go to my doctor. मुझे नींद नहीं आ रही है. But now things have changed. Now things have changed. Now things have changed. Now people have understood what is basically emotional health. They never understood what is technically emotional health. Nobody understood what is a breakdown. Nobody understood what is loneliness. Nobody understood कि यार depression होता क्या है. Now they're getting that, they're feeling it कि now कि जब आपके दोस्त लोग आपके साथ नहीं है, you can't party, you can't go outside, you can't meet friends, you बच्चे cannot go to the park. So now you've understood that there is something disturbing here. Yeah, something makes you disturb here. So what you need to do is now you need the value of small little things that you need to breathe properly. You need to have clean food. You need to work out. You need to, for example, your food is very important now. The kind of food you're eating now, because now you understand. पहले आप बाजार में चले गए आपने भज्जी खा लिए पकोड़े खा लिए आपने पिज्जा खा लिया आपने बर्गर खा लिया. Now you don't have much of access to it. So now when you're eating घर का खाना, now you know that you're more healthy, you're more stronger, and all this has because your gut has a major role to play in your emotional value. We all know about the gut is it's your stomach. So if your stomach is clean, if you have a healthy food, your minds remain stable, and then you have access to people who are going to guide you. For example, I have friends who are like very well-known psychiatrists, or psychotherapists, or yoga teacher, or Ayurveda teacher. So what happens when these people are there? So it becomes easier for somebody. Now the guidance becomes loud and clear.
look, that mental health is important and you need to take care and you need to give attention to it. So people, initially Absolutely. people were not giving attention to it. People were just saying, अच्छा अच्छा ठीक है यार, मेरे को ना थोड़ा रेस्टलेस हो रहा है, मुझे हो रहा है, मैं पार्क में घूम के आ जाती हूँ, मैं पिक्चर देख के आ जाती हूँ. But now it is for a longer duration and you staying within you, it's staying inside you. So you have to face it and you have to understand it, you have to study it, and then you have to see how to cure it. And curing is very simple. You know how you do it, whether you're doing yoga, whether you're doing pranayam, whether you're doing Ayurveda, whether you're doing homeopathy, or whether it's any kind of medicine. But you have to understand that your food is very important factor and your people whom you are there with. If you are staying with us, for example, a husband wife is staying together and दोनों की बनती नहीं है, so it's going to get Hmm. it's going to get worse. It's going to get worse. So somewhere you need to understand, either you patch up you guys or stay separate. आप अपने रूम में रहो, अपने रूम में रहो, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करो. तो mental health has nothing to do only with mental health. It has to so many things around you, your family, your friends, the kind of food you're eating, the kind of business you are in, the kind of movies you're watching, the kind of it's very important. A lot of people are watching a lot of negative stuff. So the more you watch a lot of negative stuff, your mind starts going on negative, more negative. So the more positive you will think, the more positive you will look at things. So it's much better for you. Absolutely. The word that you said, stay positive for your mental mindset is very, very important because for that we need to feed our brain with a lot of positivity too, which is very, very important. And I think that is what you are doing with your 10 up. You are creating that positivity among people, showing them the right sort of content that don't invest so much of time on news rather than invest something which is more productive and do something which is good for your health, either pranayama or yoga or all those things. As we said, while going through your profile, I have seen a lot of things that you have been doing. And there was a special request from our president, Bobby Karnani, and the whole team that we would like to hear a song from you because your voice is very, very melodious. A small song. Song from me. Yes, yes, a very, it is a request. Yes, it is a request from our president and from our team that you need to sing a song Bobby. because I'll tell you anything. I just avoid doing all this. This is only because I have a lot of high regards for Bobby and I love that woman. Yeah. So मैं आवाज तो मेरी बहुत बेसुरी है बाबा. see, even Bobby is requesting just two lines, just two lines. See, the comment she has mentioned in the Business Glory that just two lines now. The reason is that because music इतना therapeutical है ना, तो आपको लगता है कि आपकी आवाज नहीं भी अच्छी होगी, तब भी वो हम सबके ऊपर असर करेगी. So just two lines. ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से बंधे, ताकि हंसते हुए निकले दम. ऐ मालिक तेरे बंदे हम. मैं Wonderful, This is sir. only What for a Bobby. choice. Bobby को बोलना, Bobby, I love you. Yes. Crazy, yeah. That is why she has said voice is just wow, Ashish. This is what she has mentioned. So this is The sweetheart, for really. Yeah. superb song, Shalu says. So, sir, not going much into the detail, but yes, having two different sides of yours, one is glamorous and one is very spiritual. नहीं How नहीं, would you एक encourage? बदमाश, एक साइड मेरा बदमाश का साइड है और एक साइड मेरा स्पिरिचुअल. बॉबी knows it, the whole town knows it. One I am very बदमाश और one side is my spiritual. अभी सुधर गया हूँ मैं. So so let's be very clear about it. Yeah. Okay, sorry. So Yeah, tell ये me. दोनों जो sides होते हैं, it is always said कि आपके अंदर जो चीज आप उसको नर्चर करते हो तो वही चीज बाहर आती है. ये चेंजेस, ये शिफ्ट आपके अंदर कैसे आया और क्यों आया? बिकॉज ये चेंजेस आज के दौर में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज पीपल आर स्ट्रगलिंग बिटवीन टू थिंग्स. सो you are a role model for them if you can guide them. See, I'll tell you. ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस अभी आए हैं. ये अभी मैंने लॉकडाउन में व्हाइट दाढ़ी और ये बाबा वाला लुक आ गया है, तो
people are thinking like that, but I've always been a very guy who's been very spiritual. Yes, I have lived life like a normal guy. I had my share of girlfriends. I have share of my masti, daru, party, travel abroad, everything I have done. But yes, I have never crossed my limits. मैंने कभी कोई घटियागिरी काम नहीं किया, गंदा काम नहीं किया. I never knew this because my upbringing has been very clear. Being an army officer's son, I have been groomed in a very systematic manner. I know my limits. और मैंने वो लिमिट्स में ही काम किया. ये शिफ्ट जो अभी का जो स्पिरिचुअल वाला एंगल जो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है या थोड़ा सा ज्यादा दिख के आ रहा है लोगों को, उसका एक रीजन है बिकॉज ऑफ लेट मैं आई हैव स्टार्टेड गोइंग इनसाइड, डीप इनसाइड माई सेल्फ ओनली. मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आशीष ऐसा क्या रीजन है कि किसी बच्चे बहुत बोल रहे हैं, कुछ कहीं पे कुछ हो रहा है बीच में, कहीं just give me a minute, just give me a minute. No, just give me a minute, just give me a minute. यार गाना You are in the show. Sorry for keeping you waiting because No, I'm there at my in-laws. I'm there at my mother's place, and there's a birthday party. So that is why a lot of noise. All my 35 relatives are here. Oh, I'm so sorry. No problem. So sorry. I didn't know. Yeah, so I think it is fine now. Yeah. Much clear. Yeah. Yes. क्या मैं बोल रहा हूँ, भूल गया मैं. हाँ, yeah. So this spiritual angle to me, yeah. Yes. So there is no spiritual angle to it. I think I just enjoy it. ऐसे मैं बचपन से ऐसे ही हूँ यार. I have always been then, and I just thought the world needs little more towards it because I'm seeing a lot of people. What they do is Facebook पे they have a very different lifestyle. They show off. They like इतना कुछ दिखाते हैं as if बहुत कुछ है. और फिर then they call me personally, आशीष, I am very disturbed. मेरा husband मुझे छोड़ के चला गया है, मेरा boyfriend ने ditch कर दिया है, या मेरी girlfriend चले गई है, या मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया है, मेरा बेटा ऐसा हो गया है, मेरी बेटी ऐसी हो गई है. The problem is they don't understand कि सोशल मीडिया पे जो आप तामझाम कर रहे हो, आप जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, वो आपके बच्चे देख रहे हैं. और या तो आपके बच्चों को आप समझा नहीं पा रहे, because it's very important for parents to bring up their child because you have to become an example yourself. And a lot of people don't understand this. They don't understand. So you need to draw a line. My father, very strict. He's 80 now. My mom just turned, yesterday, my mom turned 78. I think 77 or 78 she turned. So, see, my upbringing is very, very, very clear, crystal clear कि boss ये करना है और ये नहीं करना है. ये तुम्हारा लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना है. And what I try to do is whatever I have little learned in myself, जो भी मैंने गलतियां बहुत सारी की हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑडियंस को वही समझाने की कोशिश करता हूँ, मत करो. For example, I really want to educate a lot of women who get into little trouble. एक रिलेशन से बाहर निकलती हैं और जब दूसरे रिलेशन में जाती हैं तो वो रियलाइज नहीं करती है कि वो एक खड्डे से निकल के दूसरे खड्डे में चली गई है. होता क्या है, वो ढूंढ रही होती है या ढूंढ रहा होता है. Since there are a lot of women in your group, I want to just tell, हमारे जैसे आदमी जो होते हैं बहुत शातिर होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं हम लोग ना बिना कुछ किए एक्टर होते हैं. हम लोग आप लोग को इतनी जल्दी बेवकूफ बना लेते हैं कि हाँ भैया, जो तेरा पति है वो अच्छा आदमी नहीं है और तेरे पति से मैं अच्छा इंसान हूँ. मैं कारी का दरवाजा खोलूंगा, मैं प्लेट में खाना लाऊंगा, मैं आपको अच्छे गिफ्ट्स ला के दूंगा. एंड वी आर सो सिस्टमैटिक. हमको अपनी चाल मालूम होती है कि हमको कैसे सामने आदमी को बेवकूफ बनाना. और एक बार वो आदमी हमारे कब्जे में आ जाता है, then we are like back to square one. So you must do a show where I need to educate women कि how men play their tricks. And I don't care what people think. Yeah, Ashu, तू क्या कर रहा है यार? Ashu, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? Because क्या हो रहा है? A lot of these young ladies who go through separation, or there are a lot of people who are there in the married life situation, but they're not happy because somewhere they're not have the strength to accept the reality of life. And reality is कि boss आपको कोई रोक नहीं सकता. आप बोलते हैं women power खाली बोलने से थोड़ी होगा. आपको एक सपोर्ट सिस्टम लगेगा. आपको एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि यार मैं यहाँ लड़ सकती हूँ, मैं भिड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगल अलग हो गई, मेरे से घर छीन लिया, मेरे से बच्चे छीन लिए, मेरे से सब कुछ छीन लिया, अब क्या करूं मैं? So this has to be a system, there has to be एक माहौल होना चाहिए
एक मोटिवेशनल, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए लोगों के यहाँ की यार कोई बात नहीं यार, डोंट वरी। और क्या होता है जब स्पेशली आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मेन और वुमेन, इट्स बोथ द साइड इज द सेम। आदमी के साथ भी होता है, जब आदमी अलग होता है तो वो डिप्रेशन में चले जाता है। लॉट ऑफ पीपल कॉल मी, आशु मैं क्या करूं यार, आई फील लाइक किलिंग माई सेल्फ, अब मैंने आज ओवर मेडिसिन खा लिए हैं, आज मेरा ऐसा हो गया है, आज टुडे इज माई लास्ट नाइट, टुडे इज माई लास्ट डे, टुडे इज माई लास्ट कॉफी आई एम हैविंग। बट नहीं यार, somebody has to tell them boss there's so much to life, बहुत कुछ है जिंदगी में यार। तो it cannot happen like this. What these तुम बॉबी को बोल के ऐसे कर, एक ना सेमिनार 1-to-1 होना चाहिए कि हर आदमी बैठा हो, एक दूसरे की आंखों में देख रहा हो और एक दूसरे की एनर्जी को समझ रहा हो कि बॉस यार करना है यार। आप जस्ट इमेजिन सुभाष चंद्र बोस टेलिंग द ब्लडी होल कंट्री तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं, मर मिटने को तैयार है। You understand? So there has to be somebody who has to, खाली ये लाइफ कोच और ये सब आके खाली बातें करके आपको ये सब प्लान्ड होता है, बिकॉज ये टेलीविजन पे जो लाइफ कोच आते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू क्वाइट फ्यू ऑफ देम, दे ऑल पेड। ये साधु महाराज बन के आते हैं और बाहर आने के बाद में दिखाते हैं कि भैया हम नॉन वेज नहीं खाते, हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे नहीं करते, हम बहुत, और बाहर जैसी शूटिंग खत्म हुई बाहर निकले भैया ऐशो आराम चालू हो गए। मैं अपनी लाइफ सारा बदमाश हूँ, मैं अपनी लाइफ चाहता हूँ, सबको मालूम, बॉबी नोज वेरी वेल व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स आपके ग्रुप में जितने आपके इस लेडीज ग्रुप में काफी लोग जानते हैं। पर रियलिटी है बॉस, लाइफ को फेस करना है, अपफ्रंट फेस करना है और हंस के और कॉन्फिडेंस से फेस करना है, और जो होगा देखा जाएगा। But there has to be a faith. Like I am a firm believer of Meher Baba and Sai Baba, and I know that. मैं जानता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई पूछे आशीष out of 100 how much do you rate as a human being, I will say 99.9%. बदमाश 100%. As a good human, yes, I have been always, I have made sure always that कि यार जितनी मदद उसे करता हूँ। So a lot of people misunderstand me. उनको लगता है यार आशीष कैसा आदमी है यार, क्या है कुछ भी बोलता है, बिंदास बोलता है। But this is the way I am. क्योंकि मेरे पैसे मैंने कमाए हैं, मैंने अपना नाम कमाया है, मैंने अपना झुका है, मैं किसी पे मोहताज नहीं हूँ। हेलो या नेटवर्क भी डर गया थोड़ा मेरे से। हेलो नेटवर्क इश्यूज। Network issue. I don't know what has happened, but today all the testing has been taken, all the lessons have been taken care of. You know, since your interview was most awaited, even the angels are testing that do you have patience or do I have patience or you have patience. Isliye all tests are with noise, with network issue. That's absolutely happening. I don't know what is happening. But I think that is the test that we are going through. और बोलते हैं ना जो हम लोग बोल रहे हैं that we need to upfront and accept it. आप हंसोगे, मैं जिंदगी में पहली बार जैसे हमको लाइफ को फेस करना जरूरी है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम गिविंग एन इंटरव्यू ऑन फेसबुक एंड दिस इज ओनली फॉर बॉबी करनानी। एंड मैंने कभी इंटरव्यू जिंदगी में फेसबुक पे दिया, मुझे आता भी नहीं है हैंडल करना फेसबुक कैसे करते हैं। दैट्स द रीजन आई एम लुकिंग वेयर आई एम लुकिंग, मेरा आधा एंगल यहाँ वहाँ जा रहा है। बट ट्रस्ट मी, माय एम इज वेरी सिंपल कि मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ लाइफ में, यार बिंदास, लाइफ को बिंदास भिड़ो और लाइफ विल जस्ट टेक केयर ऑफ यू। जब तक आप सही कर रहे हो ना बाबा, जिंदगी में कोई आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या सॉरी, आई एम वेरी एब्सोल्युटली। ये तो सर आपके जो एक्सप्रेशन है कि लाइफ को भिड़ो, पर ऐसे कई है जिनका मनोबल कम होता है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, तो उनके लिए आई वांटेड टू नो, गिव मी 2 पॉइंट्स जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े और वो लाइफ से भिड़ पाए, क्योंकि वो भिड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी सबसे इम्पोर्टेंट है पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करना बाबा। Once you accept the reality, because problem is we don't accept the reality. So first point, you have to understand that accept the reality. That for example, I accept the reality that look, I have lived my life this way and I have made out of 190 mistakes. And only 10 mistakes are good and 90 are bad. So I am concentrating right now only on my 10 positive things. So the moment you will accept it, कि यार तू ऐसा, जैसे मेरे को जब मैं फिल्म में आया था, मैं एक्टर बनने बम्बई में आया था, तो लोगों ने मुझे बोला आशीष एक्टर बनना। मुझे मालूम था मैं गुंडा दिखता हूँ, मुझे मालूम था मैं विलन दिखता हूँ, मैं विलन बन सकता हूँ, मुझे विलन नहीं बनना। I said I give up. I went behind the camera.
So accept first what the reality is. आप एक बार एक्सेप्ट कर लो कि जैसे मेरे को मालूम है मैं 6 फुट 3 इंच का हूँ, आई एम 130 kgs, आई एम लाइक आई लुक लाइक अ डॉन. अगर आप मुझे कोई डॉन का रोल दो कि भैया हाँ ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है, वो रोल मुझे सूट करेगा. तो दिस इज रियलिटी. पर अगर मुझे बोलोगे नहीं यार हीरो बनना है, अच्छा होना है, तो दिस इज नॉट रियलिटी. भ्रम से बाहर निकलो. जब आप भ्रम से बाहर निकलोगे तो आपकी 90% जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी. द प्रॉब्लम इज वी ऑल हैव दैट एक भ्रम में रहते हैं हम लोग. अरे यार मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसी हूँ, 4 लोगों ने आजू बाजू में बोल दिया बाबा आप ऐश्वर्य रहे हो, व्हाट फिजिक, व्हाट बॉडी, व्हाट परफॉर्मेंस, क्या सोशल काम कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो यार. ये भ्रम है, ये भ्रम है. इस भ्रम से बाहर निकलना है. सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप भ्रम से बाहर निकल जाए, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. Start working on yourself, like is get involved with the right kind of people. अगर आपको लोग नहीं मिलते हैं तो YouTube में जाओ. YouTube में अगर आप पॉजिटिव ढूंढोगे तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें मिलेंगी. आप नेगेटिव ढूंढोगे तो सिर्फ नेगेटिव चीजें मिलेंगी. आप पॉजिटिव आप मैसेज टाइप करो, मुझे आई वांट टू बी हैप्पी, सो यू गेट 20 बड़ी मैसेजेस आउट देयर. चूज. अच्छा ये है, कौन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है. सो व्हाट विल हैपन इज, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप अपने दोस्तों में किसी को फोन करोगे, किसी दोस्त को फोन किया, वो खुद तो परेशान होगी, उसका खुद का अपना अलग से एक सिचुएशन होगा, प्लस वो आपको और नेगेटिव में ले जाएगी. फॉर एग्जाम्पल एक कपल है जो बहुत खुश है. कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस, एब्सोल्युटली. एक कपल है बहुत खुश है और वो यस आई कैन हियर यू सर. हाँ, आप वो दोनों बहुत खुश है. अगर वो दोनों खुश है और उनसे कोई पूछता है कि भाई यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये है, तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव मैसेज देगी या देगा. वो बोलेगा नहीं यार, डोंट वरी यार, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू नीड टू डू दिस, मेक गुड डिनर, वेयर गुड क्लोथ्स, वेयर गुड परफ्यूम, डू समथिंग नाइस, पुट सम गुड म्यूजिक, गो आउट फॉर अ ड्राइव. वो आपको ऐसे सजेशन देगा. और अगर कोई ऐसा है जिसके घर के रिलेशन खुद खराब है और आप उससे आप सजेशन मांगोगे, तो वो बोलेगा नहीं यार, जस्ट लीव योर ब्लडी वाइफ, लीव योर हस्बैंड, डंप हिम, गो अहेड, गो लिव योरसेल्फ. अरे नहीं, इतना आसान नहीं होता है. So it's very important to choose your friends. Accept करो reality और उसके बाद में अपने ऊपर काम करो. अपने ऊपर काम करने के लिए आपको अपने आप ही करना होगा. कोई आपकी मदद नहीं करेगा. आपको सब बेवकूफ बनाएंगे, आपको लूट के ले जाएंगे और उसके बाद में आप खाली हाथ बैठे रहोगे और फिर आप थाली पीटते रहोगे. Yes. Very nice advice. Accept reality and choose the people around you. Very, very practical advice that you have given. Now, everyone, on behalf of Business Glory, this is the question which has come. Something for 10 up we would like to know from you. Yes, you have told us earlier that what is 10 up, or the simple funda bataya tha, but people have joined in later. For them, I would like to know more about 10 up. That is your baby. See, 10 up is a very self-sufficient, and what 10 up basically does is we हमारे खुद के studios हैं, खुद के हमारे cameras हैं, खुद के equipments हैं, खुद के props हैं. Because since we are into film production, I am into films for dog's years now, because I started my career as one of the assistant director in a film called Sharabi with Amitabh Bachchan way back with Prakash Mehra. And it's been a long journey, and then a lot of people came in my life, and then we got independent. Now me and Gaurav, we have a production house where we have all the best equipments and everything is in house. And then we do events. I think most of the Pune guys know that we do events. So we do all kind of high-end parties and high-profile weddings and all this kind of stuff. And plus I teach and groom. So सारे कुछ हमारे पास में खुद ही है. तो हम क्या करते हैं, हम ये मिशंस को ऐसे डिजाइन करते हैं कि जिसमें लोग जाते हैं और फिर हम इसे शूट करते हैं, इसे कैप्चर करते हैं. हम we are very particular about the kind of people who are involved with us. Yeah. So also then we make a film out of it and then we put it across to the audience कि देखो यार, उसमें हम म्यूजिक डालते हैं, हम उसको cinematographically शूट करते हैं, and it's all in house. It's all in house. 2 साल तक तो हमने अपने जेब से पैसे लगाए. अभी भी हम अपने पैसे अपने जेब से लगाते हैं. We don't ask anybody. अब off late जाके we wanted to involve few people because a lot of people say Ashu, we want to be part of it, we want to get into it. या तू सारी दुआएं तू ही ले लेगा, सारी blessings तू ही ले लेगा, थोड़ी हमको भी लेने दे. So we thought of involving few people, and then suddenly there are some very beautiful people. I can't name them because she doesn't want me to name her. She lives in this place, Mestros. She lives in Mestros in Vanori. Then there's somebody in Kalyani Nagar, and they're like amazing people, and there are lots of beautiful people who have joined us. And
10 up does this. बस अभी अब tomorrow there's a beautiful mission we're doing again tomorrow, and so you will be able to watch it. And बाकी तो अगर किसी को कुछ भी ज़्यादा पूछना है 10 up तो it's not an NGO first of all. And हम लोग ना तो स्कूल बना सकते हैं ना कॉलेजेस बना सकते हैं आज की तारीख में, बट हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, हम लोगों को थोड़ी देर के लिए खुश कर सकते हैं, उनके अंदर एक स्पार्क जगा सकते हैं कि यार मजा आता है यार रात को 3 बजे जाके किसी को चाय पिलाना, और फिर कोई बूढ़ा आदमी सो रहा है उसको उठा के एक हग करना, और उसको हग करके उसको एक बेडशीट दे दिया, उसे कुछ गरम गरम खाना खिला दिया, या कोई बूढ़ी माँ है उसका चश्मा टूट गया है तो उसका चश्मा ठीक कर रहे हैं, उसको चश्मा साफ दे रहे हैं, फिर somebody is just walking in the middle of the road, we just stop and hug him tight. These are the kind of things we do. And Wow. we will look khana, but this is the kind of, see, I just feel that hug is such a beautiful thing, and people don't understand the value of it. अगर आप मुझे देखोगे फेसबुक पे मैं सबको हार्ट भेजता रहता हूँ, तो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार आशु तू क्या है, लड़की लड़के सबको हार्ट भेजता है, किसी ने हस्बैंड ने मेरे को फोन किया क्या भाई मेरी बीवी को तू रोज हार्ट भेजता है, मैंने भाई तू नहीं समझेगा, मैं वो प्यार वो श्रद्धा भेज रहा हूँ, वो बाबा की ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ बोलने के लिए कि यार दिल से है यार, दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से मैं तुझे हक कर रहा हूँ, दिल से दुआ दे रहा हूँ कि तेरा हैप्पी बर्थडे है तो तेरा दिल से तेरे को दुआ है। बाकी जिसको जो समझ, सी बहुत सिंपल है बाबू, जिसको नेगेटिव सोचना है वो नेगेटिव सोचने ही वाला है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आई केयर अ डैम अबाउट इट, मेरी अपब्रिंगिंग है, आई एम फिजिकली आल्सो that is absolutely true. So a lot of comments coming in for wow, that's great, and so many things are going on. You know what, the whole thing that we have been through in this past 30 minutes, I have understood 3 things which I would like to share it with you. First thing, which I think that you have mentioned it very clearly, that you have to accept the things as they are. Second, choose the life, choose the people in and around you because they really make a difference. And third thing, it doesn't matter what people think about you, it matters most what you think about yourself. And fourth thing, 100%. and what you give to people, it should be from heart. It shouldn't be, say flashy things kar diya, but it should come out from the heart. If you follow these 4 things, I think हम लोग अपनी एक इनवर्ड जर्नी की शुरुआत करना स्टार्ट कर देंगे. सो जो भी हमने इस आधे घंटे में आपसे सीखने की, आपसे बात करने की कोशिश की, वो मैं आपके साथ सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ. सो होप यू विल अग्री विथ मी आशीष ऑन दिस. 100%, Babu. 100%. You're 100% right. 100% right. And this is what life is. I just have a little message for everybody. Yes. वही करो जो दिल में अच्छा लगता है. लोगों को दिखाने के लिए मत करो. और ये लोगों को, और लोग आपको उचकाएंगे, लोग आपको फेक प्रोमिसेस करेंगे, लोग आपको आपकी फेक तारीफें करेंगे. बट रियलिटी ये है, आपको अच्छा लग रहा है ना करो. आपको दिल कर रहा है ना कि यार मैं बीच रोड में खड़े होकर कुल्हड़ में चाय पीऊंगी और मुझे चाय सुस्की मारनी, और मतलब ऐसे पियो बिंदास, किसके बात का क्या जाता है, बिकॉज इट्स योर लाइफ. अगर आप खुश नहीं हो ना बाबू, तो कोई खुश नहीं है जिंदगी में. डू इट. and I'm telling you, I know some multi-billionaires जो चाय पीते वक्त ऐसी चुस्की मार के पीते, आवाज करके पीते. उनको मालूम है इट्स नॉट अ गुड मैनर, बट वो बोलता भाई मुझे मजा आता है, मेरी पैसे, मेरी सल्तनत, मेरी दुनिया. तो मैं भी यही समझाना चाहता हूँ, और मैंने ये अभी आपके लाइफ में रियलाइज किया है, करो जो, वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है. दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो, अपने आप को खुश करो. एंड आई डू दैट. मुझे मजा आता है. जिसको जो बोलना है बोलने दो. आई विल डू एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू. आई डोंट लिसन टू एनीबॉडी, नोबडी. एंड बॉबी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी बाबू. लव यू. एंड पता नहीं यार, ये बंदी मुझे बहुत शुरू से बहुत पसंद है. आई डोंट नो, आई जस्ट मेट हर, आई थिंक ओनली वंस आई हैव मेट हर, बट आई लव द एनर्जी शी कैरीज. I love the energy. And Absolutely. Yeah. बॉबी की एनर्जी के बारे में VNWC टीम सबसे ज्यादा बता सकती है आपको, बिकॉज उसकी एनर्जी की वजह से हम सबकी सब चल रहे हैं. और सबको प्यार, सबको, पूरी टीम को प्यार, पूरी टीम को बाबा की ब्लेसिंग्स. और कभी अगर मैं आप लोगों के कुछ भी काम आ सकता हूँ, एनी टाइम आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, जस्ट कॉल मी. आई एम जस्ट वन कॉल अवे. Just give me a call. I'm there. Yeah. Absolutely. Thank you so much. On behalf of VNWC team and Bobby, we thank you for coming on our platform. एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए, एक रिक्वेस्ट पे आने के लिए, और अपना इतना बहुमूल्य समय हमारे साथ में स्पेंड करने के लिए. इतने बहुमूल्य. वेला बैठा हूँ मैं.
And the advices you have given, and you have been so frank. I'm sure your energy is been loved by all. And on behalf of our whole team, lot of hugs, lot of love, and lot of Same here. blessing to you. Same here, Baba. God Okay. bless you all. Jai Baba. Yeah. And yes, thank you. So thank you everyone for joining in, for being here, for watching this episode. We'll come again with one more episode with the Idols of Pune. And till then, take care. Lots of loves, hugs, and blessings. Thank you and take care. Bye.